Hello learners, so today we are going to start the new video of this chapter and we'll continue this portion. We were discussing about the Nazi world view. So here student will talk about the establishment of the racial state. Student, when Hitler came to power, the Nazi began to implement their dreams of creating a racial community of pure Germans by eliminating the undesirable element from German soil. And he wanted only a society of pure and healthy Nordic Aryans. Okay, so that's why only the Aryans were worthy of prospering and multiplying against all other undesirable elements. This meant that even those who were impure or abnormal had no rights to exist. There were deaths of many other Germans apart from the Jews, uh, and who were considered mentally or physically unfit. So they were gypsies, blacks who were living in Germany, were considered as racial inferiors who threatened the purity of the superior Aryan race. So they were widely persecuted. Even the Russian and Poles were considered subhumans. When Germany occupied Poland and parts of Russia, the captured civilians were forced to work as slave labor and died through hard work and starvation. So this was the condition students that time of Jews and the person those who were undesirable. Okay, so next is the racial utopia. So, what is racial utopia, student? Here, Nazis wanted a situation where some area, rare, people, like first is genocide, and war became same or two side of the same coin, we can say. Means genocide, it means student, genocide means large scale से जो लोगों को मारा जा रहा था, ठीक है, दिस इज कॉल्ड जीनोसाइड, टू किल मैनी पीपल इन अ लार्ज स्केल. So this became the same thing, like war, right? So he started occupied Poland. He occupation, it on 1939. Settlement of ethnic Germans brought in form, in a form of occupied Europe. इनके लोगों को सेटल करवाया गया और पोल्स जो थे उनको उस जगह से हटाया गया. इन्हें फोर्स किया गया कि वे अपने दे फोर्स पीपल, दे गॉट फोर्स टू लीव दैट होम्स. एक एरिया बना दिया गया, गेटोज बनाए गए, एंड द ऑल द Polish people went there to live. Okay, they were sent there and they were moved to other parts called general government. तो एक अलग एरिया उनको दे दिया गया to live. So Polish intelligentsia were murdered to keep people intellectually and spiritually servile. So what they were doing, Polish people को तो वहाँ भेज दिया, but उनका main purpose क्या था? To kill them. Polish children who looked like Aryan were snatched from their families. The children who looked like Aryan, okay, Nordic Aryan, तो उनसे छीन लिया जाता था उन बच्चों को. Why? Because Aryan children were given to German families. And there were some experts जो कि उन बच्चे को एग्जामिन करते थे, then checked कि वो आर्यन ही है या फिर they are Jews के चाइल्ड हैं. सो दैट्स वाई लेटर ऑन अगर वो आर्यन के बच्चे होते थे तो उन्हें क्या कर दिया जाता था, किसी आर्यन फैमिली को दे दिया जाता था, जर्मन फैमिली को दे दिया जाता था जिनके अपने बच्चे नहीं होते थे. ऑब्वियसली अगर वो बच्चा ज्यूज़ है, आर्यन नहीं है, नॉन आर्यन है, तो उन्हें फिर मार दिया जाता था. ओके, नेक्स्ट इज द स्टेप्स. सम ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द Nazis, that was related to, it is divided in 3 steps, okay, 3 stages. So you can see it, steps to death in Germany. First stage, that is exclusion, 1933 to 1939. That was to segregate कर देना, कि उनको
उस जगह से अलग कर देना, राइट। देन एक तरीके से मार्क कर दिया जाता है. सपोज फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ऑन द पिक्चर देर इज़ अ बेंच एंड ऑन द बेंच इट हैज़ मार्क्ड हियर कि ये जो बेंच है ये सिर्फ किसके लिए है, इट इज़ ओनली फॉर जर्मन्स, ओके, आर्यंस, Nordic Aryans. And what they were saying, that was the idea exclusion. In first stage you have no right to live among us as citizens, like you don't have right to live as a citizen with us, okay. इन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता था, उन्हें अलग कर दिया जाता था, एक लेवल बना दिया जाता था कि वो इस जगह से इस जगह तक क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ठीक है. ये ज्यूज़ के लिए कोई भी ये जो बेंचेस बने हैं, इट वाज नॉट फॉर ज्यूज़, इट वाज ओनली फॉर नॉर्डिक आर्यंस. देन देयर इज़ द सेकेंड स्टेज, इट इज़ कॉल्ड ghettoization. So ghettoization which you will अंडरस्टैंड थ्रू गैटोज़, कुछ गैटोज़ बना दिए गए थे, कुछ एरियाज़ बनाए गए थे. एंड इट वाज द आइडिया वाज यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस, कि हमारे बीच में रहने लायक तुम लोग नहीं हो. सो दैट्स वाई इन 1942-44 यहाँ पे गैटोजिएशन शुरू होने लगा. गैटोज़ बना दिए गए, कुछ एरियाज़ उन्हें दे दिया गया. देन दे नीड टू दे फोर्स पीपल को फोर्स किया गया है कि दे हैव टू लीव दिस एरिया एंड मूव टू ghettos. Then the third stage is annihilation, 1941 onwards. So here they used to say you have no right to live. अब इन्होंने थर्ड स्टेज में क्या कहा कि you don't have right to live. Okay, in first stage they said you have no right to live among us as a citizen, and in the second stage they said you have no right to live among us, and but in the third stage they said you have no right to live, means कि तुम्हें जीने का ही अधिकार नहीं है. Okay, so here from this onward people started to kill. Okay, Jewish people were started to kill. So you can see here on this picture, this was concentration camps, and here students, this why you can see killed while trying to escape. The concentration camps were enclosed with live wires. यहाँ पे पूरी live wires लगी रहती थी, और जब भी वो यहाँ से escape होते थे अपने आप को बचाने के लिए, तो यहीं पे मर जाते थे. Next picture you can see piles of clothes outside the gas chamber. This was only the proof students. Here you can see in the fourth picture many more shoes are there. So through this they just count कि हमने कितने लोगों को मार दिया है. तो shoes taken away from prisoners before the final solution. तो गैस चैम्बर्स जो बने रहते थे उसमें डालने से पहले ये इनके कपड़े, इनके शूज़ वगैरह एवरीथिंग जस्ट दे टुक इट ऑफ एंड देन इन्हें गैस चैम्बर में डाल दिया जाता था. नेक्स्ट इज़ यूथ इन नाजी जर्मनी. Youth in Nazi Germany students, Hitler was, very interested in youth of this country. Why? He took, interest on them. Why? Because he thought this can make strong Nazi society. The youth can make Nazi society very strong, to teach them Nazi ideology to child. So that's why he just started a new way to make his country strong. What happened in schools under Nazis, all schools were cleansed एंड प्योरीफाइड, कि जितने भी स्कूल थे सारे स्कूल्स को क्लीन करवाया गया, प्योरीफाइड किया गया. एंड चिल्ड्रन वर सेग्रीगेटेड, अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन. अब यहाँ पे बच्चों को भी सेग्रीगेट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया. अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन वर थ्रोन आउट. जो भी अनडिज़ायरेबल स्टूडेंट थे, जिनको देख के उनको लगता था कि नहीं ये हमारे लिए आगे काम नहीं आने वाले, सो जस्ट दे वाज थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल. एंड देन फाइनली टेकन टू द गैस चैम्बर. द सेम थिंग, जिसको भी मारना होता था दे जस्ट यूज गैस चैम्बर, जहाँ पे उन्हें मार दिया जाता था. Teachers who were Jews or seen as politically unreliable also dismissed. Now you can see there were teachers also in school. So अगर उन्हें लगता था कि नहीं ये Jews हैं and politically ये लोग अनरिलायबल हैं, सो दैट्स वाई उन्हें क्या कर दिया जाता था, डिसमिस कर दिया जाता था. दिस वाज द प्लान. नेक्स्ट इज़ गुड जर्मन्स. सो व्हाट दे वर थिंकिंग, दे सब्जेक्ट
to process of Nazi schooling, gave them ideological training. यहाँ पे उनको एक ideological training दी जाती थी, okay, and where they were mentally made to accept that whatever is happening under Nazism is right. और उनके एक mentally इस तरीके से उनको बना दिया जाता था कि whatever is happening, okay, these all things are correct, means Hitler जो भी कर रहे हैं everything is correct. But how उन्होंने लेकिन उनका कैसे माइंड सेट किया? सो देर आर सम स्टेप्स, देर आर सम पॉइंट्स. फर्स्ट इज टेक्स्ट बुक्स वर रिटन. कुछ टेक्स्ट बुक्स जो थे उनको दोबारा से लिखा गया. ओके, रेशियल साइंस वर इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाजीज आइडिया ऑफ रेस. एंड कुछ रेशियल साइंस मीन्स सम सब्जेक्ट्स दे इंट्रोड्यूस्ड टू जस्टिफाई नाजीज आइडिया ऑफ रेस. कि वो क्या करें, जो नाजी की जो आइडिया है, जो रेस है उस नाजीज़ की, उस आइडियोलॉजी को जो है वो अच्छे तरीके से उन्हें एक्सप्लेन कर सके. स्टीरियोटाइप अबाउट ज्यूज़ वर क्रिएटेड इन स्कूल्स. एक स्टीरियोटाइप बना दिया गया कि ज्यूज़ आर नॉट गुड एंड Nazis are good. So children were taught to be loyal and submissive. और उनको ये बता दिया गया कि तुम्हें लॉयल होना है फॉर योर ओन आइडियोलॉजी, लाइक फॉर नाजीज. हेट ज्यूज़ एंड वर्शिप हिटलर. अब ये लोग क्या करने लगे, इनका माइंड किस तरीके से सेट कर दिया गया कि दे जस्ट स्टार्टेड हेटिंग टू ज्यूज़. और किसको पूजने लगे? दे वर्शिप टू हिटलर. Violent sports were promoted to make children iron-hearted, strong and masculine. अब जितने भी बच्चे थे उनको violent sports सिखाया गया and make children iron-hearted, बहुत strong बनाने की कोशिश की ताकि वो बाद में जाके उनकी आर्मी में एडमिट हो सके. They made youth organization to educate German youth. द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म. एक यूथ बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन दे फॉर्म एंड दैट वाज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म. So here student, I'll make another video for this and will complete this portion in next video. Thank you so much.